ପିଲାମାନେ गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जमती आपण मन जानछंती करंट अफेयर एवं स्टार्ट करवा। आज टिके डिले ही जेछि बिकॉज़ कि आपण मनकर टेक्निकल टिके इश्यू थिला ता सहित होजे मोर भी आसबे टिके लेट हे गेला बिकॉज़ ऑफ द ट्रैफिक। तो समस्त चलो समस्त रेडी अछु। आज भी हम करंट अफेयर करबा ता तो क्वेश्चन डिस्कशन करबा बोथ प्रीलिम्स और मेंस में। चलो तुम स्टार्ट करबा। फर्स्ट जो टॉपिक है कथा हम कि एक्सेलरेटिंग इंडिया हाई वैल्यू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन माने जदि हमें कौन सी गोटे क्रॉप को बारंबार बारंबार कौन कर प्रोडक्ट माने हार्वेस्ट कर कल्टिवेट कर रेदर देन कि हमें सिंगल क्रॉप को कल्टिवेट करबा बेटर कि हमें कौन करबा ना बहुत सारा क्रॉप को डाइवर्सिफाई करबा सो दैट कि सॉइल जो फर्टिलिटी रहबो सेटा भी बेटर हे परबो सॉइल हेल्थ बेटर हे परबो। ओके तो एटा कौन बाय न्यूज रे अछि देखिबा व्हाई इट इज इन न्यूज। तो फर्स्ट जिनस होछ आपण मानकर कि द यूनियन बजट 26-27 तो यूनियन बजट आपण मानकर पिला माने आसीची फेब्रुअरी रे आसीथिला ऑलरेडी आसी सालानी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए क्रॉप स्पेसिफिक एंड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट diversification into high value crops across India's coastal regions, northeastern states and Himalayan areas. देखो क्रॉप रो डाइवर्सिफिकेशन एथि पइका हे परुनी तार गोटे ड्रॉबैक होछ अपन मानकर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया होची ताहु ना फार्मर्स माने। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स मान को दिया होची जो क्रॉप ऊपर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो farmers are more interested to cultivate those type of crops rather than other crops. Okay, ताको ध्यान में रखे कि गवर्नमेंट कहले कि स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस कराई छी कि क्रॉप स्पेसिफिक और रीजनल डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी हबो कहिना सब रीजन में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल रो आपण मानकर अवेलेबिलिटी अछि डिफरेंट डिफरेंट आपण मानकर क्लाइमेटिक कंडीशन अछि तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को कल्टीवेट करबा निहाती भाबरे आवश्यक। ओके सो द फोकस इज ऑन प्रमोटिंग क्रॉप्स सच एज केमती कि जदि कोस्टल एरिया अछि तो कोस्टल एरिया रे कोकोनट हे परिबो कैस्यू हे परिबो कोको हे परिबो अगरवुड हे परिबो वालनट आमंड सैंडलवुड एंड पाइन नट्स टू इंप्रूव फार्मर्स इनकम एंड स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। तो एई सब जिनस कोन अपन एक्सपोर्ट भी अधिक हबो जेमती कि वालनट हे गला आमंड हे गला आ ओकर कैस्यू हे गला ए सब जिनस माने कोन हाई वैल्यू राइट। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स मैंने कहते ना ड्राई फ्रूट्स तो जो भी फ्रूट्स खाऊच ताठू जो ड्राई फ्रूट्स खाऊच तो ड्राई फ्रूट्स रो वैल्यूटा कोन अछि ताठू कोट ना कोठी अधिक अछि। तो हाई वैल्यू जोठी कि आपण मानकर जो आगु जो आपण मानकर थिला कि गवर्नमेंट कोन चाहला कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम तो फार्मर इनकम को केमती डबल करबो काहे कि ना हमर भी जदि आपण माने देखिबे कि आम कंट्री रे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अछंती बहुत ज्यादा केतरण अछंती ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो मान अछंती दे आर मोर देन 80%। तो मोर देन 80%। तो 80% फार्मर्स आर small and marginal farmers that means they are holding less than 2 hectare of land। तो ସେମାନେ ପାଖରେ 2 हेक्टेयर ରୁ कम land ଅଛି तो ସେତିକି कम land रे if they will cultivate something which is going to provide them the high value crops जोटा कि आपण मानकर बेसी पैसा तंको रिटर्न आसीबो if they will cultivate those type of walnuts हे गला almond हे गला कोकोनट हे गला कैस्यू हे गला कोको हे गला कोकोर आपण माने कोन तरी करे चॉकलेट अगर वुड हे गला एई सब जिंस से माने कल्टीवेट करले तले कोट ना कोट से माने को अधिक पैसा आसीबो बुझ पाछे कि नै ताको कोट ना कोट अधिक प्राइस आसीबो। दिस मार्क इज शिफ्ट फ्रॉम सीरियल डोमिनेटेड फार्मिंग टू हॉर्टिकल्चर लेड रूरल डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर माने कोठी जोडी आपण मानकर वेजिटेबल हे गला बाकी सब जिंस आपण मानकर जोडी आपण कोठी फ्लोरिकल्चर भी आल्सो कमिंग अंडर द हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करया पे गवर्नमेंट कोट ना कोट कहूची। तो हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस हम देखिबा 24 और 25 रे जोडी पीआईबी रू मानची प्रोडक्शन ग्रोथ मिलियन टन देखिबा 2023 और 2024 रे 2013 और 2014 ले आपण देखिबे 277 थिला जोटा कि 2024 और 25 रे आपण 371 है। तो प्रोडक्शन ब्रेकअप तो एती तो बॉडी ची बॉडी फ्रूट्स से कोन अछि 118 फ्रूट और वेजिटेबल ले आपण हॉर्टिकल्चर केतरे जाउची 218 35 वाला अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स।
तो हॉर्टिकल्चर कोट ना कोट डेवलपमेंट होची एटा होची आपण मानकर कोन अछि ना डाटा अछि एई जो डाटा अछि दिस इज ऑथेंटिक डाटा तो आपण माने एई जो डाटा अछि एक आपण माने मेंस राइटिंग रे कोट करते मेंस राइटिंग देखो डाटा इज वेरी इंपोर्टेंट व्हेन यू राइटिंग इकोनॉमिक क्वेश्चंस आउ जो इकोनॉमिक रे जो मेंस रे जो क्वेश्चन अछि पिला माने सेतिर आपण मानको दुईटा डिवाइड करै अछि गोटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट another one is agriculture so economic development को you will get two questions from the economic development जोटा कि अपन inclusion development unemployment poverty infrastructure those chapters and agriculture भी अपन माने केतरा क्वेश्चन पाई परबे ना एग्रीकल्चर भी अपन माने दुटा क्वेश्चन पाइबे तो चारटा क्वेश्चन अराउंड अपन को निहाते 70 to 100 क्वेश्चन you are getting from the economics okay तापर कोन अछि what are high value crops कहा को हमें high value crops कहबा high value crops are mainly referred to horticultural crops such as fruits vegetables flowers spices plantation crops एगला plantation को coconut type रो medicinal plants aromatic plants the smell भलो करबो in north it generates significantly higher income per unit of land compared to traditional crop like rice wheat and pulses ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର କୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହର୍ଟିକଲଚର ଆମେ ଅଧିକ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପର ୟୁନିଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ରହିବ ପର ୟୁନିଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ରହିବ पर यूनिट एरिया एମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବ तो जोटा कि आपन सिग्निफिकेंटली हायर इनकम आपन फार्मर्स मान आसो जोटा कि गवर्नमेंट भी चाहूँ कि फार्मर मान इनकम को डबलिंग करा जाओ सेटा हे पारे दे आर कॉल्ड हाई वैल्यू बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रूट्स जदी लगा हला जदी आपन मान देखो राइस लगा तो राइस पर आपन माने कोन करबे ना थोड़े आपन कल्टीवेट कर सेते बेले आपन माने ऑलरेडी माने कोन लेबर मान को एम्प्लॉय करियो पुनः हार्वेस्ट कला बेले करियो बट जब फ्रूट्स ये सब जिन मेडिसिनाल प्लांटेसन स्पाइसेस एम कौटी ना कौटी आप सब लेबरर्स मैंने दरकार फ्रूट्स मान तोड़ाई तो से कौटी ना कौटी एम बेसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्ट्रंगर एक्सपोर्ट आप बेटर हो पार इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी माने जदि आम केवल पल्सेस व्हीट राइस बाकी भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अच्छे जमीक आप मिनरल्स विटामिन्स सब प्रकार प्रोटीन हो गला दैट कैन नॉट बी we cannot get all the things from a variety single variety of crops आपण जब डाइवर्सिफाई करिवे सेते आपण मानकर न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिएंट आपण मानकर बॉडी रे रिक्वायर अछि सब न्यूट्रिएंट आपण मानकर मिल पारबो तापर कोन एग्जांपल कोन अछि कोकोनट कैश्यू कोको स्पाइसेस मेडिसिनल हर्ब्स फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स वालनट हे गला आलमंड हे गला अगरवुड हे गला ए सब जिंस मानकर एग्जांपल्स तापर दिस क्रॉप्स आर जनरली लेबर इंटेंसिव माने जोटी कि आपण मानको अधिक लेबर दरकार पड़िबो टू कल्टीवेट दोस टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड सपोर्ट एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माने जो आपण मानकर एग्रीकल्चर को प्रोसेसिंग करके आ गोटे आपण बेटर प्रोडक्ट करछन ताको आपण कहबे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेकिंग देम इंपोर्टेंट फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जदि आपण मानको जो रियल जूस देखिछ ना नहीं रियल जूस एक्चुअली कोन ना आपनकर जो फल जूस करा होची मतलब केमिति भाबरे प्रोसेस करा होची सो दैट कि ताकर लाइफ टाइम को बेसी टाइम बढ़े दिया होची ओके तापर देखियो व्हाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी कोन पे हमको दरकार कि हमें काहे कि चाहउछंदी क्रॉप रो डाइवर्सिफिकेशन हो बोल फर्स्ट होची इंडियन एग्रीकल्चर हैज रिमेन हेवीली डिपेंडेंट ऑन द सीरियल्स especially rice and wheat. Why? Because MSP has been provided for those crops. MSP कौन पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करछि कौन पे ना गवर्नमेंट चाहछि कि फूड सिक्योरिटी कंटिन्यू ठीक हो गवर्नमेंट पाइगा फूड सिक्योरिटी अजी इंपोर्टेंट तापर एक्सेसिव जदि हम सीरियल कल्टीवेशन करबो एनवायरमेंटल स्ट्रेस करबा स्टार्ट हबो पर्टिकुलरली इन पंजाब हे गला हरियाणा हे गला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हे गला देखो जो जगह वाटर जमी कि आप जानते राइस रोटे कौन ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप राइस गोटे कौन वाटर इंटेंसिव क्रॉप यदि वाटर इंटेंसिव क्रॉप जे कौन स्टेट रे सपोज वी आर कल्टिवेटिंग राइस
where we do not have a sufficient water. Okay, तो सेठी कोन हम करछनी से सेई जगह रे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कराउछ, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन when we are doing ground water extraction तो कोट ना कोट अपन माने ग्राउंड वाटर रे माने कोन जो जोटा अपन माने ग्राउंड वाटर उठेले तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होबा समय लागिवो से कोट ना कोट प्रॉब्लमेटिक होछ सेते आपण मानकर जो आपण मानकर फाइनेंस मिनिस्टर अछन निर्मला सीतारामन से थरे कहले कि हमको कोबळे बहुत ज्यादा हम भाबछन कि राइस को एक्सपोर्ट करूछन हम राइस को एक्सपोर्ट करूछन हम कंट्री रो ग्रोथ होछ बट कोट ना कोठे वर्चुअली यू आर एक्सपोर्टिंग वर्चुअली अपन माने कोन वाटर भी एक्सपोर्ट करूछन वर्चुअली यू आर एक्सपोर्टिंग वाटर बुझिपारछ कि नहीं कहीं राइस पाइका अपन कौन दरकार वाटर दरकार तो आम कंट्री वाटर भी आप कोट ना कोटी एक्सपोर्ट कर वो जो फ्लोटिंग वाला जो इरिगेशन अच्छी कमी पानी नहीं पकईदेव तो जोटा कि आप एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर हो पारना जोटा कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर हो पारना तो जो आपको डाइवर्सिफिकेशन दरकार डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप improve farm profitability while reducing the ecological process तो इकोलॉजिकल प्रेशर को से कमेवा सहित फार्म रे से कोन करबो ना फार्म रे प्रॉफिटेबल टाको भी से मते कोन करबो प्रॉफिटेबल भी करेबो हाई वैल्यू क्रॉप्स आल्सो क्रिएट रेजिलियंस अगेंस्ट मार्केट शॉक्स बिकॉज़ फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल क्रॉप जदि फार्मर माने सिंगल क्रॉप पर डिपेंड कले ताले सकाले से सिंगल क्रॉप को मार्केट रे चाहिलेनी बा तार प्राइस ड्रास्टिकली कोन रेड्यूस हे गला तार इंपैक्ट कहां पर पड़बो तो फार्मर्स मान को पर पड़बो जदि से डाइवर्सिफाई करथिबे ताले ताको एते जगह रे फरक पड़बो नाही They strengthen nutrition security by increasing the supply of fruits, vegetables, nuts, and other nutrient-rich produce. तो nutrient भी जो problem अच्छे हम कंट्री रे कि nutritional deficit अच्छी सेटा भी अपन माने reduce कर पारे. Okay. तब देखिए कि horticulture is a driver of agricultural growth. तो हम देखिए कि horticulture केमती हमरा ड्राइवर ऑफ द एग्रीकल्चरल ग्रोथ क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे वी नीड की हॉर्टिकल्चर भी हमको ग्रोथ होगा दरकार सब तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हला होता है हमको हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट 37% ऑफ ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ऑन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सब सेक्टर डिस्पाइट ऑक्युपाइंग लेस लैंड कंपेयर टू सीरियल जदि माने कोन होची ना सीरियल प्रोडक्शन हम करूछंती सीरियल प्रोडक्शन ले जति कि हमको लैंड दरकार ताको कम लैंड ऑक्युपाई करिकि भी हमें हॉर्टिकल्चर 37% ग्रॉस वैल्यू आउटपुट पाउछंती इंडिया टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन रीच 370.75 मिलियन टन केबे 2024 और 2025 दिस डाटा इज इंपोर्टेंट जदि आपण मानको इकोनॉमिक्स रे कोठी डाटा मिलुची माउथर भी कहूची पेपर पेपर आपण मानको जो भी अछि 1 2 3 4 चार्टा पेपर पाइगा चार्टा आपण माने करंट अफेयर पाइगा चार्टा पेपर आपण करंतु सेइथरो ही आपण माने कोन करबे ना जे कोन से आपन को डाटा मिलुची तार सब हेडिंग देकी सेतरे आपण नोट बने के रखुंतु समस्त पचारंती कि मैम हमें केमती पढिबु कि करंट अफेयर केमती पढिबु फास्ट आपण को करंट अफेयर पढिबो फास्ट मूलदुआ हैला आपण फास्ट मने रखिबे सिलेबस जदि आपण सिलेबस जानि नाहंती ताले आपण को करंट अफेयर पढिबा मुश्किल है फास्ट यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस सिलेबस जो आप जानवे से रिलेटेड टॉपिक आसीगला करंट अफेयर बा न्यूज आसीगला ऑटोमेटिकली आपनकर माइंड को अच्छा एटा सिलेबस रे अछि तो दैट माइट ए पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर मी ओके सेमति भाबर तमने पढि परबो जदि कहबो कि नाही सिलेबस न पढिबो तले जानि परबो नाही आ गोटे जिंस सब जिंस रो जो डाटा आपन मन को मिलु जोटा ऑथेंटिक डाटा जदि आपन माने कोठी भी पढुछन को भी सोर्सेस को आपन माने पढुछन करंट अफेयर इट्स ओके बट जो डाटा कथा आसुची से जिंस को आपन मन को सब बेले गवर्नमेंट वेबसाइट रो बा मिनिस्ट्रियल वेबसाइट आपन को चेक करा पड़बो जदि से डाटा से समान थिबो ताले से डाटा आपन एग्जाम रे लिखिबे और एल्स अप्रोक्सीमेटली लिखिबे केबे भी स्ट्रांगली लिखिबे नाही तापर द सेक्टर हैज ग्रोन एट अप्रोक्सीमेटली 4.45 ओवर द लास्ट डेकेड व्हिच इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप्स तो ट्रेडिशनल फील्ड क्रॉप जते करे ग्रोथ करूची हॉर्टिकल्चर ग्रो करूची केते 4.45 India is the world's largest producer of onions and salad and ranks second globally in vegetables, fruits and potatoes. एटा तमरा prelims रे पारे prelims रो क्वेश्चन हे पारे कोडा सेंटेंस देतबो ओके तापर दिस shows that horticulture is now a major engine of agricultural income and rural employment. So agricultural income by और rural employment by horticulture is now better.
तो रीजन स्पेसिफिक हाई वैल्यू क्रॉप स्ट्रेटेजी कौन ना कोस्टल रीजन ले कौन हम कोस्टल रीजन ले कौन है पारिबो जदी जेमती आपण मानकर क्लाइमेट रहइबो केमती आपण मानकर सॉइल रहइबो केमती आपण ह्यूमिडिटी रहइबो प्रेसिपिटेशन केते रहउची से हिसाब रे आपण डिपेंड करबे कि आपण को क्रॉप कोड प्रोड्यूस करबे यदि कोस्टल रीजन अछि तो कोस्टल रीजन में आपण कोन कर पाइबो ना कोकोनट कैश्यू कोको सैंडलवुड ए सब कल्टीवेट कर पाइबे इंडिया सेकंड ग्लोबली इन कोकोनट प्रोडक्शन केरला ही बहुत ज्यादा कोकोनट केरला ही गला तमिलनाडु ही गला इवन आल्सो ओडिसा रे भी कोकोनट अछि काइना कोस्टल अछि with around 22.44% of world output support 30 million livelihood through the coconut economy तो कोकोनट वाला इकोनॉमी आ वाटर प्रोसेसिंग भी होची सेमती नो कि कोकोनट वाला आपण खाली करछन कोकोनट ही से सेल करछन नो प्रोसेसिंग भी होची ओके एग्री प्रोसेसिंग भी होची देखिन आपण मानकर बहुत सारा ब्रांड अछि जो माने कि कोकोनट वाटर करछन आ कोकोनट वाटर के यूज करछन यूनिक वे तो केतरा 30 million livelihood को से livelihood थ्रू द कोकोनट इकोनॉमी तो कोकोनट इकोनॉमी रे आपण मानकर 30 million livelihood सपोर्ट होची The policy focused on replacing old and low yielding coconut trees with high yielding varieties of promoting India's cashew as a premium export brand. तो अभी जो लो yielding थिला माने केतेटा गोटे प्लांट केते नंबर ऑफ कोकोनट दोची न करके माने जो स्लो ट्रेडिशनल न करके हाइब्रिड करा है सो दैट की हाई यील्ड वेराइटीज हे परबो आ इंडिया कैश्यू को केमते हम प्रमोट करबो इंडिया रे कैश्यू बहुत ज्यादा तळे रही छै ना ड्राई फ्रूट्स मेनिकली ड्राई फ्रूट्स बेसिकली इंडियंस माने एते ज्यादा कंज्यूम करन ड्राई फ्रूट्स बाहर लोक माने कंज्यूम करन तो इंडियंस माने के पैदा ड्राई फ्रूट को प्रीमियम ब्रांड करबो दरकार पैकेजिंग ऊपर काम दरकार तो क्लीनलीनेस ऊपर काम दरकार सैनिटेशन ऊपर काम दरकार ताले हम कंट्री समथि कोनोसी जिंस अभाव नै ओके तो सब टाइप रो सॉइल इज अवेलेबल इन इंडिया सब टाइप रो क्लाइमेट इज अवेलेबल इन इंडिया तो इंडिया रे ए सब जिंस बेटर वे हे पारिबो बट स्ट्रेटेजी हमको बेटर करे पे पड़िबो फॉलो करे पे पड़िबो सो दैट कि हम जरा डेवलपमेंट कर पारिबो कोको इज बीइंग प्रमोटेड एज एन इंटरक्रॉप इन कोकोनट एंड Arf coconut plantation because partial sunlight conditions are suitable for the cocoa cultivation. Okay, जदि हम देखिबे कि कोको कल्टीवेशन पाइका कोन दरकार ना पार्शियल सनलाइट दरकार डायरेक्ट सनलाइट हेले भी कोको कल्टीवेशन बेटर हे परबे नै द इन दिस इंटरक्रॉपिंग मॉडल प्रोवाइड्स एडिशनल इनकम विदाउट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा लैंड ओके तो कोन इंटरक्रॉप माने कोन ना गोटे आपण माने कोन करबे कोकोनट लगे देले तापर आपण माने कोन लगे कोको लगे एथि लगे आपण को कोकोनट कोकोनट तापर एथि लगे आपण को कोको सो दैट कि जो कोको वाला अछि कोन कोकोनट रहला तो पार्शियली कोन पाइबो ये partially ये sunlight पाइबो partially sunlight पाइबो sunlight will be received to the coco partially so that कि यार भी ग्रोथ हे पारिबो जोटा कि आपण मानकर जान माने partially जदी कोको प्लांट को sunlight न मिले कि डायरेक्ट जदी sunlight मिलला ताले कोठा कोठा त लॉस हो partial तको sunlight मिलवा दरकार तापर कोन अछि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो कोस्टल रीजन हम जानिले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ले कोन हबो ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ले बीइंग पोजीशन इन मेजर सेंटर फॉर अगरवुड कल्टीवेशन अगरवुड कल्टीवेशन आपण मानकर नॉर्थ ईस्टर्न ले बेटर हे परबो इंडिया हैज नियरली 150 million अगरवुड ट्रीज इन अबाउट 90% आर कंसंट्रेटेड इन त्रिपुरा एंड असम को जगह अछि त्रिपुरा और असम रे आपण मानकर 90% आपण कंसंट्रेशन अछि अगरवुड रो अगरवुड इज यूज्ड टू ग्लोबल ओड परफ्यूम इंडस्ट्री हैज वेरी हाई एक्सपोर्ट वैल्यू तो परफ्यूम वाला जदी इंडस्ट्री अछि और तमे माने जानि कि आजिकली गोटे परफ्यूम लग्जरी गोटे भाव गणा हो कि परफ्यूम यूज कर तो आगो को ये जिन कौन मैंने वैल्यू अधिक बढ़ी बढ़ी जीव एक्सपोर्ट जो आम जिन करवा तो डबल फायदा आमको फास्ट आम कंट्री जो मैंने फार्मर्स अच्छा से बेटर है कहीं मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन अवर कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स so their income is going to be double second thing is more export more dollar will flow into our country okay जदि हमें मोर जमी जब जमी एबे हम रिसेंटली कथा हले ना कि हमर जो इंडियन इकोनॉमी अछि that was fourth position in 2022 but now it is reduced to the sixth position when more export is going to happen that means more dollar inflow will coming into the India जते अधिक हमर इनफ्लो आसीबो डॉलर रो तले कोड ना कोड आपण मानकर जो इकोनॉमिक जो सिक्स वाला स्टैंडर्ड वासे ताको भी ऊपर को भी जाय परबो बुझ परछे कि नहीं सेति पई कि आपण को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कि हम एक्सपोर्ट ऊपर काम करबा आ जदी एटा परफ्यूम जो आपण मानकर ग्लोबल ऑड परफ्यूम इंडस्ट्री अछि ता पर जदी एटा इंपोर्टेंट कोड अगरवुड आ अगरवुड केते अछि 150 मिलियन अगरवुड ट्रीज हमर अछि सेते को डेवलप करे पे दरकार बोथ द फार्मर्स फॉर डोमेस्टिकली
farmers are going to be benefited and second जिनसे ना हमको export रे boost मिलेगा कोट ना कोट हमारे डॉलर जो हमारे कैपेबिलिटी जो डॉलर हमारे इन्फ्लक्स अधिक बढ़ेगा त्रिपुरा alone has the potential for nearly 2000 crore annual turnover थ्रू टर्नओवर माने कोन टर्नओवर माने होची जहां भी आपन ट्रांजैक्शन है लेना देना टोटल मिसी के आपन माने टर्नओवर ताको कहै छै थ्रू सस्टेनेबल अगरवुड कल्टीवेशन एंड रेगुलेटेड एक्सपोर्ट अलोंग विथ साइट्स नॉर्म्स माने साइट जोड़ा अपन मनकर एनवायरमेंटल अछि कन्वेंशन बैंक जोटे कि अपन मनकर फ्लोरा बा फौना जोड़ा अपन मनकर अपेंडिक्स अछि 1 2 3 जोटा कि अपन मनकर जोड़ा साइट्स को लेकी हमर मन कोन अछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेथरे भी अपन मनकर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 सेमति सब कैटेगरी करल अछि तो सेमान को एक्सपोर्ट करबो तो केम को जगह एक्सपोर्ट कर परबो को जिन सब रेस्ट्रिक्शन अछि ओडा वल्नरेबल हे गला एंडेंजर्ड हे गला क्रिटिकली एंडेंजर्ड हे गला तो प्रोहिबिशन अछि फॉर देयर एक्सट्रीसिस बोथ फॉना एंड फ्लोरा तो साइट्स रो नॉर्म सहित जेटा रेगुलेटेड हवा दरकार दिस क्रिएट्स स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्राइबल लाइवलीहुड एंड एक्सपोर्ट अर्निंग तो ट्राइबल लाइवलीहुड माने के पाइका अपॉर्चुनिटी हबो और एक्सपोर्ट भी हमें अर्न कर परबा हिमालयन हिली रीजन तो प्रथम हम देखिले कोस्टल में कौन करि परिबा ना कोको करि परिबा कोकोनट करि परिबा इंटरक्रॉपिंग करिबा सो दैट कि कोकोनट which will flourish and bloom if there is a partial receive of the sunlight so that is why coconut सहित कोको को हमें partially जेमति रहबे तो हमें इंटरक्रॉपिंग करबा तापर हमें देखिले कि नॉर्थ ईस्टर्न माने त्रिपुरा और असम रे कोन अधिका अछि ना अगरवुड अछि केते परसेंट अछि 90% फ्रॉम त्रिपुरा एंड असम 150 मिलियन ट्रीज टाइप्स अपन अगरवुड अछि तार डेवलपमेंट केमति करि परिबा तेने परफ्यूम रे दरकार अछि बहुत अपन एक्सपोर्ट भी हे परिबो ट्राइबल लाइवलीहुड को बेटर करि परिबो फार्मर मानकर इनकम को डबल कर परिबो तापर हम देखबे हिमालयन रीजन ओके हिमालयन रीजन में कौन कर परिबो जम्मू कश्मीर हे गला हिमाचल प्रदेश हे गला अदर हिली रीजन्स आर बीइंग प्रमोटेड फॉर walnut, almond, चिकलाऊ पाइन नट्स ओके चिकगोजा पाइन नट्स ए सब जिन हम सेठी कोन करबा प्रमोट कर परबा these crops are highly suitable for cold climates offer significantly higher income than conventional farming suppose ki conventional farming something we are doing very conventionally एबे मु आपन मान को कहली जो जिंस ऊपर हमरा एमएसपी मिलुची farmers are more trained to cultivate those crops rather than diversifying their own crops. So diversification of your own crop is much more required. Why? Because every जदि हम सब region को देखिबे जो region रो distribution अछि हम कंट्री रे कोन अछि सब जगह रे कोन समान भले अपन मानकर सॉइल मिलुची ना समान भले अपन को क्लाइमेटिक कंडीशन अछि नाही ना तो कोठी कोस्टल अछि कोठी कोल्ड वाला रीजन अछि नॉर्थ ईस्ट हे गला कोठी हिली रीजन अछि तो डिपेंड करे कि को जगह रे हमें कोटा कल्टीवेट कले हमको बेटर फायदा हो से हिमालयन वाला जो रीजन जो कोल्ड वाला रीजन अछि सेठी हमें कोन करि परबा ना वालनट आलमंड चिलगोजा पाइन नट्स ए सब जिंस हम सेठी करि परबा तो जोटा कि क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ले बेसी अधिक फ्लोरस माने फ्लोरिश होबा एने देखलो हॉली सेठी ग्रीन ऊपर लिखा डाल छै देखो तो ओके से हाई डेंसिटी प्लांटेशन मॉडल आर बीइंग प्रमोटेड टू प्रमोट improve productivity आउ कोन हो ना मैक्सिमाइज लैंड एफिशिएंसी हाई डेंसिटी माने गोटे जगह रे सपोज कि आपण मानकर बेसी सपोज एते गोटे रो अछि आपण चारटा एपटे आपण चारटा एटा आपण मानकर हैला पर एटे अधिक जदि आपण लगेबो त कम कम डेंसिटी अधिक आपण कम जगह रे अधिक प्लांटेशन आपण करूछन दिस सपोर्ट ट्राइबल इनकम्स एंड रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम हिली एरियाज व्हाई माइग्रेशन हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ income or lack of livelihood if they are not having sufficient amount of livelihood or they're not earning sufficient amount to sustain their life that is why they migrate to the urban cities but semanko migration अटके दरकार मु आपन का गोटे कथा कहूची कि जदि बहुत थर माने आपण देखिथिबे अमित शाह जी जप मानकर कोन अछंदी ना होम मिनिस्टर अछंदी से बहुत थर कहिसंदी कि माइग्रेशन जदि आपण मानकर हिली एरिया रे गेला जंती कि सपोज इंडिया अछि इंडिया रे जो भी आपण मानकर जो एरिया रे हिली एरिया बा जो मानकर बॉर्डर एरिया रे ए जगह जदि आपण मानकर माइग्रेशन हे जिवो तो कोट ना कोटी कोन हो ना जो आपण माने जानछन हमर जो कंट्री अछि तो नेबर मानकर सहित हमर मानकर बॉर्डर मान कंट्री जो कंट्री अछंदी समान तो चाहछन कि हमको फाळे फाळे नहीं जाबो बुझबले चाइना भी चाहू हमको नहीं जाओ पाकिस्तान भी चाहूची तो से एई जगह माइग्रेशन को हमको अटकेवार अछि और सेई जगह माइग्रेशन में केमती अटकेबा if we are not providing them enough livelihood if we are not providing them enough money to sustain in that areas तो तबला में माइग्रेशन को अटके परिबा नहीं
ओके ताको हमें अटकई परिबा नहीं तो माइग्रेशन को हमको अटकई पड़े माने सेमानू हमको दबा पड़े तो बहुत आपण मान देखो आपण ए जिंस को लेकी सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी सहित लिंक करबे दैट इज अप टू यू हाउ यू आर लिंकिंग बोथ द चैप्टर तो कोड ना कोड जति आपण चारटा आपण पेपर अछि सब चैप्टर आपण कोड ना कोड इंटरलिंक अछि दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ स्मार्टली यू आर लिंकिंग दैट ओके तापर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमको डाइवर्सिफिकेशन करिवार अछि what is the institutional support हमको institutionally support कौन बोलुछि mission for integrated development and of horticulture तो फास्ट होछ अपन माने करो केमिति इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगा तो हॉर्टिकल्चर कौन में हॉर्टिकल्चर हमको 4.45 रेट रे ग्रोथ देखाउछि अबाउट द लास्ट डेकेड जोटा कि अपन माने करो कन्वेंशनल सीरियल क्रॉप को बेटर तो प्रथम होछि कौन MIST इज सेंट्रली स्पॉन्सर scheme और सेंट्रली सेक्टर scheme ऑलरेडी मु कहछि when any scheme is centrally sector that means 100% of fund is given by the central government when centrally sponsored तो तते कोन हबो ना रूल करा जिवो कि सेंटर किछि दबो स्टेट किछि दबो 90-10 हे पारे और सबनगर 60-40 हे ओके तो एटा डिवाइड करा जाय बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एटी कोन में स्पॉन्सर होची कोन में ना एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट नॉट अ सेंटर सब्जेक्ट जोटा आपन शेड्यूल 7 ले अछि तो एई भली भाबरे आपन रिवीजन हबा भी दरकार कि एई जदि जिनसटा मते पढिली एई जिनसटा आउ कोडी कोडी मु पढिछि को सेक्टर रे आसुछि को शेड्यूल ले आसुछि केते नंबर शेड्यूल ले आसुछि कॉन्स्टिट्यूशन रे को लिस्ट रे आसुछि इवन कि दे हैव आस्क्ड यू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से माने क्वेश्चन पचातले प्रीलिम्स नो स्टेट को लिस्ट रो केते नंबर एंट्री ओके तो दे विल नॉट आस्क कि सब गुडा आपन को एंट्री मन रखिया पे पड़िबो बट गोटे गोटे जिंस जोटा कि इंपोर्टेंट अछि एग्रीकल्चर हे गला लैंड जिंस हे गला पुलिस हे गला तो को एंट्री आसुंदी if possible you remember that before your exam you will see कि क्वेश्चन को टाइप रे आसे से बना तुमको पढ़िया को पड़िबो काइना जे भी क्वेश्चन बनेबो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि कि बनेबो ओके और जेहेतु एबे हमर बहुत ज्यादा सिलेबस यूपीएससी से अलाइन होची ट्राई करबो कि बोथ यूपीएससी एंड ओपीएससी बोथ रा अपन माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि जाउछन एंड नेवर एवर इग्नोर सीसैट never ignore CSAT last year CSAT was disaster for many students never ignore CSAT ताको मैं प्रैक्टिस करथबो सैटरडे संडे ट्राई करो कि घंटे 1.5 घंटा दबा पाई CSAT तापर देखो इट सपोर्ट्स नर्सरी डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सब जिंस कल्टीवेशन को प्रोटेक्ट करबो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे पन चेष्टा करबो हार्वेस्ट होला पर भी मैनेजमेंट अपन माने केमती करबे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करबे केमती स्टोरेज करबे से सब जिंस को इट is the main policy instrument for strengthening horticulture diversification कोडा ना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एई सब जिंस गोटे गोटे मन रखिया पई पड़िबो काई ना आपण को लेखिया पई पड़िबो मेंस राइटिंग रे आपण को लेखिया पई पड़िबो देखो जदि ऑब्जेक्टिव रो गोटे जिंस मजा कोन प्रीलिम्स रे आपण को सामने रे आंसर अछि आपण लिखिबो सब्जेक्ट रे कोन आपण को मन रखि लेखिया पई पड़िबो से पई बी कॉशियस कि कौन पढ़ू तो कौन नहीं बारंबार रिवाइज करो रिवाइज न करिवो तने एग्जाम रे मने पड़िबो नाही झपसे मने पड़िबो ब्लर पढ़ी थिली गोटे कौन थिला बट यदि एग्जैक्ट रिमेंबर करे पे चाहूचो रिवीजन इज मोस्ट आपण माने जहां भी पढुचंती ताको सिलेबस को कम करंतु बुक कम करंतु जहां पढुचंती ताको बारंबार रिवाइज करतु करबे निहाती आवश्यक तापर कोन ला कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड गोटे हम कंट्री रे अछि वर्क द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोकोनट कल्टीवेशन एंड इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया सपोर्ट करछि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट केमती हबो प्रोसेसिंग केमती हबो मार्केटिंग केमती हबो एंड वैल्यू एडिशनल सच एज वर्जिन कोकोनट ऑयल कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट ओके कोकोनट खाली आमे जिना ओडिसा रे एमती कोकोनट को खाउछंदी बा पौडे पानी पिउछंदी बा आउ कोन भगवान को पूजा करछंदी बट कोकोनट ऑयल हैज बीन यूज्ड इन द केरला रे कोकोनट ऑयल भी यूज करछंदी एक्सपोर्ट करे पे बेटर होची डायरेक्टरेट ऑफ कैशू नट एंड कोको डेवलपमेंट सेटा भी गोटे अछि जोटा कि इंस्टीट्यूट सपोर्ट रिसर्च नर्सरी मॉडर्नाइजेशन फार्मर्स ट्रेनिंग यदि भी कोई भी फार्मर if the farmer is willing to diversify the crop so traditionally that farmer has been cultivating only rice or wheat now this farmer is going to diversify so what is needed कि भाई ताको जानिबो दरकार केमति जानिबो यदि आपण माने फार्मर मान को ट्रेनिंग न देबे तन तो जानि ही पारेबो ट्रेनिंग रिलेटेड टू कैशू हे गला कोको प्रोडक्शन हे गला it helps improve export competitiveness in productivity okay export को boost करेबो और productivity भी बढ़ेबो for that farmers farmers producer organization गोटे अछि FPOs
एक्चुअली भी अपन पढ़ी कोटे सब्सिडी रे पढ़ी सुगर मान को जो सुगर है गला सुगर इंडस्ट्री मान को एक्सपीएस मान को सब्सिडी दिया जाए डायरेक्टली ओके सेटा जदी करंट अफेयर आसिला तो नेक्स्ट के हमें कथा हम आज हमें बहुत ज्यादा कथा हो ताले बहुत लेंथी हो आउर भी हमको टॉपिक देखियार अछि तो एफपीओज आर बीइंग प्रमोटेड टू ऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर्स engage in coconut cashew cocoa and other horticultural crops they improve bargaining power processing capacity and market access processing capacity माने एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग माने कोकोनट रो कोन अपन माने तैयारी कर परिबे कोकोनट जेबे एमती बाहर जोटा कि लाइफ ताको जो जनरल जति दर कोकोनट पानी प्रोडक्ट होती गोटे दिन ले खराब हो जाउची त लाइफ को अपन अधिक बढ़े पछ प्रोसेसिंग करा होची रियल जूस हे गला ताको जति प्रोसेसिंग करा होची और मार्केट एक्सेस भी हवा दरकार देखो मार्केट एक्सेस इज वेरी इंपोर्टेंट इमेजिन करो गोटे फार्मर्स अछि तो से पे तो अपन माने माने ऑनलाइन ऐप रे भी आपण मानकर ई नाम वाला जो बाहर करा है सो दैट कि कस्टमर शुड नो कि फार्मर पाखर ए जिनस अछि डायरेक्टली आपण मानकर मिडिल मैन को जेमती रिमूव कराई दो जदि मिडिल मैन रहिबे तले कोट ना कोटे फार्मर कोन होची सपोज 20 रुपीस आसला कस्टमर पे करछि आपण मानकर केते टका 100 रुपीस पर बीच से जो 80 रुपीस अछि सेटा कोट ना कोटी अन्य मानकर को पड़ौछि तो मार्केट एक्सेस हवा वेरी इंपोर्टेंट market जदि access ना हो suppose you have cultivated something but market doesn't know that you are having that thing और market को accessible नहीं माने infrastructure खराब अछि नदी पारे कैसे अछि तो जदि को logistic is there transportation is there तो transportation में बहुत टाइम लगुची in horticulture things like flower हे गला fruits हे गला they are perishable products right तो हॉर्टिकल्चर जिनसे जदि एग्रो प्रोसेसिंग में निया जबो ताले अपन मानकर बहुत हे परिबो और अपन मान को लॉजिस्टिक को सपोर्ट करे पे पड़िबो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करबा पे पड़िबो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जदि अपन सपोर्ट न कले तले कोट ना कोट अपन मानकर मार्केट एक्सेस लेक हो और मार्केट एक्सेस लेक गला माने अपन जहां भी कल्टीवेट करंतु ई मार्केट पकरे पहुंची पारुनी तापर जदि खराब हो जाय ताले तो ऑब्वियसली लॉस हो फार्मर तो मार्केट एक्सेस इज वेरी इंपोर्टेंट चैलेंजेस कौन कौन अछि पढ़ी गले हम सब भलो 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 अब चैलेंज हमें पड़िबो ना हाई वैल्यू पेरिनियल क्रॉप्स अछि जो सैंडलवुड हे गला अगरवुड हे गला हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड माने कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट तो से जो कैपिटल जेते आपण हमको कहूछ ना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अछंती एंड दे आर मोर देन 80% नाउ इन इंडिया so the small or marginal farmers achonti how can they going to afford the initial capital which is required for the sandalwood and agarwood तो सेटा गोटे प्रॉब्लम हैला लॉन्ग gestation period बहुत टाइम लागिबो ताको कल्टीवेट करले कि लगे देला तापर गले प्रॉफिट आनिबो फॉर दैट टाइम इज मोर रिक्वायर्ड अनलाइक सीरियल्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर हाईली पेरिसेबल तबे जंती कहली जंती कि आपण कहछि इंफ्रास्ट्रक्चर हमर बेटर नै कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज नॉट बेटर लॉजिस्टिक्स आर नॉट बेटर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जगह रे बहुत खराब अछि पेरिसेबल एंड रिक्वायर स्ट्रांग कोल्ड चेन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट दिस फार्मर फेस मेजर लॉसेस टमाटो आपण कल्टीवेट करछन्ती बस आपण टमाटो कानी कि ठीक टाइम रे मार्केट में पहुंची परले नाही सब टमाटो ही खराब हे जबो तापर असले क्लाइमेट चेंज इफेक्ट क्रॉप्स सच एज वालनट हे गला आलमंड बिकॉज़ चेंजिंग स्नोफॉल पैटर्न टेंपरेचर इंक्रीजेस डायरेक्टली रेड्यूस द प्रोडक्टिविटी अब कौन पे होची बिकॉज़ ऑफ योर ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज़ ऑफ योर क्लाइमेटिक चेंज तो क्लाइमेटिक चेंज हे गला ग्लोबल वार्मिंग हेला तो कोट ना कोट प्रॉब्लम हमो small and fragmented land holding make it difficult to achieve economies of scale processing and export economics of scale माने कोन जतबले हमें कोनोसी जिंस को सपोज आपण गोटे वाला गोटे टी शर्ट बनेली तबे आपण को कि 10 टा टी शर्ट बनेली तबले आपण को बेसी पैसा लागिबो ना बनिया पे तो 100 टा बनेबे ताला आपण डिस्ट्रीब्यूटेड हे जेमति कि फॉर एग्जांपल आपण खाया पे चाहउछनी मटन चिकन कि आपण खाउछनी प्रॉन्स भी खाया पे चाहउछनी ताके बहुत सारा आइटम खाया पे चाहउछनी but 500 rupees is not enough कि आपण एते सब जिंस खाइ भी पारबे बट प्रॉब्लम सेतेबे सॉल्यूशन कोन तार कि 10 टा 15 टा 20 टा कि 100 लोक मिसी गले पिकनिक गुटे प्लान कले तापर आपण समस्त चांदा हला 500 रुपीस ताले आपण समस्त से जिंस खाइ पारबे कि नै सेतेबे बेसी मात्रा में प्रोडक्शन होय ना सेतेबे आपण मानकर प्रोडक्शन कॉस्ट कमी जाय ताको हम कोन कहउछंती इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट मीटिंग इंटरनेशनल phytosanitary and quality standard remains a major challenge for accessing premium global market such as the European Union and USA. So, semane multiple times they have rejected our mangoes. Okay, India wo mango अछि they rejecting कि भाई तमरो phytosanitary आपनकर बेटर हे पारु नाही आपको sanitary नाही आपनकर क्वालिटी खराब अछि आपन ठीक भाबरे मेंटेन करनांती
तो से क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने पड़ो बिकॉज दे विल कंज्यूम इफ स्टैंडर्ड मीट्स ताकर जो स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी अच्छी सैनिटरी अच्छी कैशू होगला वालनट होगला आलमंड होगला तो मीट करने ये सब जिन ध्यान देवाई पड़ो वीक ब्रांडिंग एंड लिमिटेड वैल्यू एडिशन रेड्यूस एक्सपोर्ट कंपटीशन तो जब वीक होगला ब्रांडिंग जब वीक होगला सहित लिमिटेड वैल्यू एडिशन होगला कौट ना कौटी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कमे ओके सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया तापर हम देखिबा कि सिग्निफिकेंस कोन अछि ना डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव फार्मर इनकम सपोर्ट द नेशनल गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी यदि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी हो तो आपण मानकर जो नेशनल गोल अछि कि भाई हमें डबल करबा कोन डबल करबा डबल द फार्मर्स इनकम तो कोट ना कोटी सेटा आपनकर सफल माने कोन हेई परिबो strengthen export oriented agriculture reduce dependence on low value cereal production he paribo labor intensive that means ki more employment can be created in agricultural sector horticulture create more rural employment especially for women and tribal communities तो women माने जो माने बाहर को भी आसी पाना तो से माने भाई कोट ना कोटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कला एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी इसी कोन करो प्रमोट करिवो फूड प्रोसेसिंग एसेंशियल ऑयल नॉट प्रोसेसिंग प्लांटेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्प्रूव कर रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो कि राइस होगा तो आप डिपेंडेंट न हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट आम सब जिन कल्टिवेट कर कोकोनट जो दरकार अच्छी कोस्टल एरिया जो दरकार अच्छी हिमालयन एरिया आम वालनट आलमंड से इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर नेशनल न्यूट्रिशन थ्रू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड vegetable nuts and spices nutrition is not we cannot get all the nutrition from one type of crop for that we need fruits vitamins darkar हमको minerals darkar हमको that can be achieved through the different of crops तो जो भी अपने न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अच्छी नेशन लो ताको भी हम सॉल्व कर पाबो तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ओके वे फॉरवर्ड कौन करबा ना वे फॉरवर्ड होची कि अपन मानकर फास्ट हला रेड्यूसिंग कमे पई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करे पई पड़िबो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करे पई पड़िबो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप करे पई पड़िबो कोल्ड स्टोरेज ग्रेडिंग पैकेजिंग फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कि अपन मानकर जोटा अपन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखिबो इंडियन प्रोडक्ट्स सच एज सैंडलवुड Indian cocoa, premium cashew should be developed as a global brand by 2030 to command higher international prices. यदि हमको ताको ग्लोबल हम देखो एक्सपोर्ट करया पे चाहउछंती तो फाइटो सैनिटरी मेजर्स को देखिया पे पड़िबो आ हमको पैकेजिंग भलो करया पे पड़िबो ब्रांड क्रिएट करया पे पड़िबो मोर एफपीओ शुड बी प्रमोटेड जो एफपीओ अछि ताको बेसी करया पे पड़िबो इन फ्रैगमेंटेड सेक्टर्स लाइक कोकोनट कैशू कलेक्टिव मार्केटिंग एंड बेटर प्राइस रियलाइजेशन एंड जियो स्पेशियल मैपिंग करने पड़ो डिजिटल मॉनिटरिंग करने पड़ो ड्रोन तान हो जाओ एआई द्वारा हो जाओ बी एक्सपेंडेड फॉर क्रॉप लाइक अगरवुड एंड नॉट ऑर्चर्ड्स टू इम्प्रूव yield estimation and policy targeting तो एते जिनस हमको करे पड़ो इफ यू वांट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर और इन हॉर्टिकल्चर ओके तापर अपन माने कंक्लूजन अपन लिखि परिबे कि बजट रे रिफ्लेक्ट हेतला strategic move towards region specific horticulture development based on agroclimatic strength एटा जदि आपण मानकर डायरेक्टली क्वेश्चन ले जदि बजट देई की पचारथिबो ताले एटु आपण स्टार्ट करबे इंट्रोडक्शन ले इफ नॉट जदि केवल हॉर्टिकल्चर बा डाइवर्सिफिकेशन पचारची ताले आपण माने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करबो व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन व्हाट इज हॉर्टिकल्चर तापर आपण माने इन कंक्लूजन ले एटा को लिखिबे इफ द क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड की बजट रे एजेंस हेची व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड व्हाट इज द चैलेंजेस ताले एटा आपण लिखिबे इंट्रोडक्शन ले इफ क्वेश्चन सेमती पचारी नाही ताले एटा आपण लिखिबे कंक्लूजन ओके हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन रिप्रेजेंट ए मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू मार्केट लिंक सब्सिस्टेंस फार्मिंग माने कोन जति के आपण उत्पादन करूछन जति के आपण प्रोडक्शन आपण हार्वेस्ट करूछन सेति के आपनकर माने कंट्री जो पॉपुलेशन अछि सेमान को ऊपर सफिशिएंट कि सेमाने खाइबे कि बंचबो मार्केट लिंक माने जतो आपण कल्टीवेट करूछन टू एक्सपोर्ट और टू सेल कमर्शियल एक्सपोर्ट बने गला इनकम ओरिएंटेड सिस्टम if system is supported by infrastructure branding institution and farmer participation high value crops can be foundation of a more prosperous and resilient rural economy जदि आमे ए सब जिंस करि परिबा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करि परिबा ब्रांडिंग करि परिबा इंस्टीट्यूशन जदि बेटर हे परिबा को जिंस आमे कथा हले से सब जागो और फार्मर पार्टिसिपेशन जदि करबा ताले हमर बिकम भेलो हे परिबो ओके चलो देखबे आज हम क्वेश्चन करबा ओके फर्स्ट कौन अच्छी
With reference to high value crop diversification in India, consider the following statement. So with reference to high value crop diversification in India, consider the following statement. First achi, high value crop generate higher net returns per unit of land compared to cereals. Cocoa is promoted as an intercrop in coconut plantation due to suitable shade conditions. Agarwood cultivation in India mainly concentration in the Himalayan region. So कौन यार आंसर हम आम जब पढ़ले गोटे डिस्कसन कले से अनुसार जब आम देखा ताले यार आंसर कौन हम Fast कौन अच्छी high value crops generate higher net returns per unit land compared to cereal. Yes, that is why when we are thinking कि हमें high value करिबा जदि cereal हमको अधिका देई थांता ताल हम cereal रे थांते ना तो high value हम कौन में करछंते काहे ना हमको कोउठ ना कोउठी एटी अधिका हमको जनरेट करे पे पड़बो net returns. Second अच्छे देखो ठीक अच्छी cocoa is promoted as an intercrop in coconut plantation due to suitable shade conditions. This is also correct. Coconut coconut cocoa why because ଏମାନଙ୍କୁ directly आपण ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର नहीं cocoa ପାଇଁ कौन दरकार cocoa ପାଇଁ ଦରକାର partial sunlight तब तार कौन आंसर हम अगरवुड इज कल्टिवेटेड इन इंडिया अगरवुड कथा मु कहली कोठी हुए त्रिपुरा आउ आपण मानकर कोठी हुए आसाम त्रिपुरा एंड आसाम तो आपण मानकर थर्ड वाला सेगमेंट भूले जबो तो 1 and 2 will be the right answer. Okay, explanation अच्छी पिला माने देखि दबो. Okay, तो हम कौन करबा 1 and 2 will be the right answer. Consider the following statement. Kharif crops are sown in the months of March to April. Second कौन अच्छी Kharif crops require abundant rainfall and are harvested after the monsoon. तो कौन है रे आंसर हम Kharif crops में से देख पिला माने तो आंसर कौन हम देखो तो जब हमें देखिए बात खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ्स ऑफ मार्च टू अप्रैल नो मार्च टू अप्रैल काहे क्या तो जेद अछि ना तो शॉर्ट टर्म में अछि तो जेद नॉट खरीफ ओके तो सेटा तो अपन को एटा तो अपन को हबो ही नहीं आज वाला स्टेटमेंट रॉन्ग अछि खरीफ क्रॉप रिक्वायर्ड एविडेंस रेनफॉल एंड हार्वेस्टेड आफ्टर द monsoon yes केबेटा हार्वेस्ट में सितंबर लास्ट आड़ को जेतलो मानसून चल जाता है तो साउथ वेस्ट वाला जो मानसून आसे साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया आसे तो केबे हुए ना फर्स्ट जून रे से केरला को हिट करे तो हमर ओडिसा रे केबे आसे ना 15 जून आसपास ओडिसा रो जो टाइम रे वर्षा हुए तो 15 जून आसे और केबे जाए ना 15th of September 15 सितंबर सेटा खत्म हो जाए तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट but statement 1 is wrong तो देखिए कोड अछि both statement 1 and 2 are correct no both statement 1 and 2 are correct but statement 2 doesn't explain the statement 1 no statement 1 is correct but statement 2 is incorrect no yes D will be the right answer statement 1 is incorrect but statement 2 is correct explanation अछि explanation अपन निजे पढिबे 3 number question कोन अछि consider the following crops and their primary growing seasons in India तो पचाछि कि consider the following crops and their primary growing seasons in India wheat is primarily grown in the rabi season rice is primarily grown in the kharif season mustard is primarily grown in the zaid season cotton is primarily grown in the kharif season तो कोड ए बिदरो ठीक अछि ए बिदरो कोड ठीक अछि जोटा अपन मानकर विंटर रे होची त हम कोन कहउछन राबी ओके तो जदि से पास्ट अछि wheat is primarily grown in the rabi season this is correct rice is primarily yes kharif yes this is also correct mustard is primarily grown in the zaid खरा दिन में कोडी के देखि छ सोरस चाष हबार देखि छ तो शीत दिन देखि छ ना तो एटा तो रबी नॉट zaid एटा होची रबी तो थर्ड वाला सेंटेंस तो रॉन्ग अछि फोर्थ
Cotton is primarily grown in the Kharif season. This is also correct. So 1, 2 and 4. So it is 1, 2 and 4. So this in the statement of a ठीक अछि. So only 3 will be the right answer. With reference to the false cultivation in India, with reference to the false cultivation in India, consider the following statement. False improves soil fertility by fixing atmospheric nitrogen through symbiotic bacteria in their root nodules. So ये क्वेश्चन आपण मानकर आपण मानकु कहि दोछि 2023 प्रीलिम्स रे ए टाइप रे गोटे क्वेश्चन आपण मानकर आसीथिला ओसीएस. Okay, gram is predominantly cultivated during the Kharif season under the high rainfall conditions. So what will be the correct answer? What will be the correct answer? Okay, so code answer आपनकर correct हबो. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माने ओएस सब जो माने क्लास करी छ भी एनवायरनमेंट क्लास तो माने को कहै छी कि पल्स रे आपनकर जो रूट नोड्स रे कोन थाए राइजोबियम जोटा कि आपनकर हेल्प करे कोडा रे ना आपनकर फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि. ग्राम माने जो आपनकर चिकपीस कल्टीवेटेड ड्यूरिंग खरीफ नो रबी एटा केते बेले हुए ना रबी रेनफॉल एते को बहुत ज्यादा दरकार ही नहीं. तो बेसिकली रबी सीजन में हुए. तो कौन होगा आंसर? तो आंसर 1, ओनली 1, ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सरी गला अपन मानकर प्रीलिम्स जाबे में पढिले प्रीलिम्स रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन अछि डिस्कशन कले. तापर हमें देखिबा कि मेंस क्वेश्चन कौन. हाई वैल्यू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग Indian agriculture from subsistence oriental farming to income oriented farming. Discuss the context of regional crop planning, farmers' income, enhancement and sustainable agricultural development in India. So 250 words अछि माने 20 mark रो क्वेश्चन समस्त ट्राई करे लिखे पे बारंबार कहूची. If one question you write every day then 26 question you are writing per month. It's very important कि question writing और स्पेशली जो मैंने ए वर्ष एग्जाम दबने बट नेक्स्ट ईयर टाइम प्लान करछो दे कैन इजीली राइट वन क्वेश्चन पर डे. इट्स नॉट वेरी इंपॉसिबल टास्क. ओके, तो से समझ ध्यान दबो कि गोटे क्वेश्चन जेंति लिखियो. चलो, इंडो नॉर्वे पार्टनरशिप. इंडो नॉर्वे पार्टनरशिप रे कोन अछि देखिबा ना. ओडिशा हैज साइन एग्रीमेंट विथ द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च टू लॉन्च मेराइन स्पेशल प्लान. एटा अपन मानकर करंट अफेयर आसला कि ओडिशा कोन करछि ना साइन करछि जे तमे ओपीएस को टारगेट करूछंती तो ओडिशा पे भी टिके देखिया पे पड़िबो. ओके, तो ओडिशा कोन करछि ना ଗୋଟେ एग्रीमेंट साइन करछि विथ द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च. नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च फॉर द लॉन्च ऑफ मेराइन स्पेशल प्लान जोटा कि ओडिशा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट एमएसपी अंडर माने एठी एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नो. एठी एमएसपी माने कोन मेराइन स्पेशल प्लान phase 2 of the Indo-Norway Ocean Partnership. Indian से तो Indo-Norway Ocean Partnership से तो past है phase 1 previously covered the UT of Puducherry and Lakshadweep. तो जब कहबो which of the state जदि तुम देखो प्रीलिम्स रे को टाइप तुम से गेम खेल पारो आइदर से तुम पकेबो कि ओडिशा is the first to implement MSP under the phase 2 of the Indo-Norway Ocean Partnership. No, तो तुमसे पचले ओडिशा इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट देन करेक्ट. व्हाई? बिकॉज़ ऑलरेडी यूटी माने कॉन्सेप्टली जोडे केला पुडुचेरी आउला लक्षद्वीप. ओके, जस्ट लाइक सिटी एडमिनिस्ट्रेटर. तो व्हाट इज मेराइन स्पेशल प्लानिंग. तो एटा भी तुम जाने में पड़बो जेमति अपन मानकर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूज लैंड यूज जूमिंग डिवाइडिंग लैंड इनटू रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज एमति होची ना नहीं. तो एमएसपी स्ट्रिक्टली जोन्स द ओशन. तो एमएसपी कौन करे ना जोन करे ओशन को. साइंटिफिकली एलोकेट्स मेराइन एरियाज फॉर स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, डीप सी पोर्ट्स एगला कमर्शियल फिशिंग, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. अगेन द गोल कौन है एक्सपांड द ब्लू इकोनॉमी. ब्लू इकोनॉमी माने समथिंग रिलेटेड टू द वाटर, ओशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिग्रेडिंग मेराइन हेल्थ.
तो मेराइन हेल्थ को डिग्रेड न करके केमिति ब्लू इकोनॉमी को से डेवलप कर, दिस इज द गोल. व्हाई ओडिशा? ओडिशा कौन पे करे पे चाहूची प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल फ्लोरा एंड फौना, बिकॉज की ओडिशा हैज 550 किलोमीटर कोस्टल लाइन vulnerable to rapid industrialization. MSP will map the ocean floor to protect Odisha's exceptionally rich, globally recognized ecological asset. तो आमर जो कोस्टल रीजन अच्छी तो 550 एटी लेखा है, बट डाटा वेरी करे 480 समटाइम्स डाटा भी देखे, तो ये को मैंने ओडिशा वेबसाइट रू ही डाटा को आप करेक्ट करेंगे कि कौन अच्छी, तो जोटा कि vulnerable to the rapid industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी बड़ी जान ना नहीं, तो कोठी ना कोठी मेराइन हेल्थ पर कौन करिवो ना इम्पैक्ट पकेबो, सेति पई ओडिसा को कौन करिवर अछि ना देखो फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करिवर अछि. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इकोलॉजिकल एसेट जेंति चिलिका हे गला, आपन मानकर भीतर कनिका हे गला, तो चिलिका लेके पूरी टिके जान दबा. तो एशिया's largest brackish water lagoon and India's fast Ramsar site. So both the statement is giving you कि आपन मानकर एशिया's brackish water lagoon और India's fast Ramsar site. Last year 2024 OCS Prelims the question asked about Chilika Ramsar sites. Okay, so that is important. Fauna कौन अछि? That is largest wintering ground for migratory birds of the Central Asian flyway, जैसे कि greater flamingo हे गला और pelicans हे गला. तापर कौन अछि? It is the only known natural habitat for endangered Irrawaddy dolphins in India. So only known language. But ये only लगी था मैं कहे कि एक्सट्रीम गला मैंने डबल चेक करे पे पड़िबो. यदि एटा तुमको क्वेश्चन आसे ताले ओनली ठीक हबो कि कहार ना नेचुरल हैबिटेट कहार ना एंडेंजर्ड हला IUCN स्टेटस फॉर द इरावती डॉल्फिन्स इन इंडिया. फ्लोरा कौन रिच इन एक्सटेंसिव सी ग्रास मेड्यूज अछि व्हिच एक्ट एज ए क्रिटिकल कार्बन सिंक, जेटा कि कार्बन सिंक करे एंड फिश नर्सरीज बना काम करे हैला. तापर भितरकनिका नेशनल पार्क अछि, तो प्रथम हम देखले चिलिका, तापर भितरकनिका. सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, फर्स्ट वन इज सुंदरबन ऑलरेडी डिफरेंट. तो सुंदरबन ला सब फर्स्ट इंडिया माने मैंग्रोव, तापर आपण गला सेकेंड हला आपण मानकर के ना भितरकनिका नेशनल पार्क. फ्लोरा कोन अछि डोमिनेटेड बाय द सुंदरी ट्रीज, हेरिटेरिया फॉर्मर्स, एटा भी मन रखिबो हेरिटेरा फॉर्म्स, तो या नाम भी मन रखिबो, मे बी दे कैन आस्क. It is the prime breeding habitat for the giant apex predators, the saltwater crocodile alongside king cobras and water monitor lizards. तो एमन सब एमन को प्राइम मिले. तापर आसे आपण मानकर गहरीमटा मेराइन सेंचुरी. तो गहरीमटा located near भितरकनिका, it is globally renowned as a world largest आरिबाबा. आरिबाटा माने को मास नेस्टिंग करे किए ना ओलिव रिडले सी टर्टल्स. काली भी विषय में डिस्कशन करथिले. तो ओलिव रिडले सी टर्टल्स कौन है IUCN स्टेटस कौन अच्छी काली कही ना वनरेबल है. तब देखिए हमें क्वेश्चन बुझ पाइले कि नहीं. तो विथ रेफरेंस टू द कोस्टल इकोलॉजी ऑफ ओडिशा एंड मेराइन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, with reference to the coastal ecology of Odisha and marine administration of India, consider the following statement. First one अछि, the National Center for Coastal Research is a attached office under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second अछि, Chilika Lake is a major brackish water lagoon known for hosting the endangered Irrawaddy dolphins. Vitarkanika National Park is predominantly a mangrove ecosystem, famous for being a prime habitat for the saltwater crocodile. So, your answer कौन होगा? Which of the following statement is or are correct? तो जो मैंने क्लास देखो जब लाइव अच्छो, they try to give the answer. पहला आंसर दबा पाइन ट्राई करो. जो मैंने क्लास देखो जो से मैंने आंसर देखे पाइन ट्राई करो. ओके, जो मैं देखिबा कि जो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च
तो हमको फील हो कि भाई ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट आसुथिबो, बट नो, इट इज कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ओके, तो फास्ट वाला स्टेटमेंट आप मनकर रॉन्ग हो गला. चिलिका लेके भी मु कहली कि ओनली वाटर फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज इरावडी डॉल्फिन्स नेचुरल हैबिटेट से मनकर. तो सेकंड वाला ठीक अच्छे भीतर कनिका भी मु कहली ऑब्वियसली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेटा हमको देखिया पे मिलुची. तो थर्ड टा भी ठीक अच्छे. तो बी विल बी द राइट आंसर 2 and 3. तो 1 टा अपन मनकर रॉन्ग. ओके, तो इंडियाज फॉरेस्ट कार्बन सिंक द क्लाइमेट चेंज पैराडॉक्स. सेटा भी देखिबा कि भाई इंडियन तो कौन अच्छे हमें देखिबा कि इंडियन फॉरेस्ट कार्बन सिंक द क्लाइमेट चेंज पैराडॉक्स. तो कौन पे अपन मनकर आसीदा ना कार्बन प्रोजेक्शन अकाउंट इंट्रूशन फाइंडिंग. The new scientific modeling study suggests a paradox. If global greenhouse gas emissions continue to rise, India's forest could theoretically store nearly twice as much carbon by 2100 compared to today. ओके, जदि ग्लोबली जो आप मनकर ग्रीन हाउस गैसेस बॉडी बॉडी का चालू. देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड हो गला, आप मनकर मीथेन हो गला, इसको तुम ग्रीन हाउस गैसेस. ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥ ଅଛି ନା, ଆର୍ଥରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ସରଫେସ୍. ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ସନ୍ ଅଛି. ତ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ୍ ହେଉଛି, ସୋଲାର ରେଡିଏସନ୍ ହେଉଛି. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ୍ ହୁଏ ନା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ଟ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ, ସର୍ଟ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ. ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସରଫେସ୍ ହିଟ୍ ହୁଏ କି? ତ ଆନ୍ସର ଇଜ नो. এই क्वेश्चन आपन केबे आस्तिला 2016 और 18 आई डोंट रिमेंबर यूपीएससी प्रीलिम्स. ये देखिबो समस्त. तो या द्वारा हिट हुए कि नो, जेतेबेले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो, जेतेबेले ऊपर को गला एटा होछ आपनकर लॉन्ग वेवलेंथ है. ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जेतो हुए सेतेबेले आपनकर एटमॉस्फेयर हिट हुए. या द्वारा एटमॉस्फेयर हिट हुए एटा आसला, एटा सरफेस रे पड़ला, सरफेस हिट हैला, सरफेस को रिफ्लेक्ट करियो ताको हम कोन बोलछंती टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. सेतेबेले आपनकर एटमॉस्फेयर हिट हुए. तो ये जो हीट को अपन को कैप्चर केमती हे परबे ना, हीट मेंटेन केमती होबो बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस जेतेबेले अपन माने खरा रे सपोज अपन माने रखि देछंती कार्टा, कार्टा अपन मानकर खरे अछि, तापर अपन पसी गला पर केमती फील हो, कोन में फील हो बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हे जाय जोटा कि हीट प्रोवाइड करे. बट एटा होची पॉजिटिव इफेक्ट तारा ना ग्रीन हाउस गैसेस. बट जदि कोन दिन से एक्सेसिव हैला तर नेगेटिव हो. तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़िबो हम जे बहुत ज्यादा एमिशन कले बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक जनरेशन हमें कले. आ आपनकर मिथेन होची कोन भाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे आप मनकर मिथेन भी बहुत ज्यादा जाउची. तो कोठी ना कोठी ग्रीन हाउस गैसेस कोन ला बॉडी बॉडी चले. जदि अधिक बढ़ी जीवो तर लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हैला तो कौन सब स्टार्ट हे ग्लोबल वार्मिंग हैला. तो ग्लासियर्स पिघल लागिबो. ग्लासियर्स जेतले पिघलला आपनकर एल्बिडो आपण जानथिबे, एल्बिडो काली कहिथिबे जेतेबेले आपण मानकर सन अछि, सन कोन करबो जेते भी आपण रिफ्लेक्ट हुए ना. तो जो एल्बिडो कोन काम करे, जदि आइस अछि, आइस से कोन व्हाइट सडनली कोन हो सब दिन को रिफ्लेक्ट करबो, ताको हम कोन को रिफ्लेक्सिसिटी एल्बिडो को जाय एल्बिडो और ताको हम कोन को रिफ्लेक्सिसिटी. जदि एटी आपण मानकर एटा सब कोन बना धोई आसे जीवो, जदि आपण आइस सब मेल्ट हे जीवो ताले आहुरी भी आपण मानकर जदि गरम आसो तो रिफ्लेक्ट हबन से अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो, तो आहुरी गरम हबो. ग्लोबल वार्मिंग है साइक्लोनिक चेंज होला, बुझि पड़छ कि नहीं साइक्लोन आसे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. तो एटा कोबे कोन क्वेश्चन 2024 प्रीलिम्स ओसीएस साइक्लोन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट. बहुत सारा जिंस था आंसर हो ग्लोबल वार्मिंग. ओके, एई भली भाबरे आपन को पढिबार अछि लिंक करी. चलो देखिए कौन अच्छी ना द साइंस वाई कार्बन स्टोरेज इंप्रूव कौन पाएगा कार्बन स्टोरेज टा बॉडी बॉडी चले. दिस प्रोजेक्टेड ग्रोथ इज ड्रिवन बाय टू इंटरएक्टिंग इकोलॉजिकल फिनोमेना. द कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, फर्स्ट होची कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, अनदर इज राइजिंग प्रेसिपिटेशन.
Plants require carbon dioxide for photosynthesis. Higher concentration of carbon dioxide in the atmosphere acts as a fertilizer, enhancing the rate of photosynthesis and plant growth. तो बेसिकली कौन हम ना फास्ट जिन होची कौन भाई स्टोरेज बढ़ुची ना फास्ट होची कार्बन डाइऑक्साइड कौन दरकार फॉर द फोटोसिंथेसिस इवन की फॉर द फोटोसिंथेसिस देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज अबाउट कि अपन मानकर एनर्जी ऊपर क्वेश्चन थे कि केमती हम एनर्जी को हम स्टोर करते स्टार्ट करते पोटेंशियल फॉर्म में ताको अपन टिके देखिबे तो एई टाइप रो क्वेश्चन से पचार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पचार जदि बेस अपन मानकर कि अछि बेसिक जिंस जदि अपन क्लियर अछि करंट अफेयर जदि अपन ताको पढुछन तले कोड ना कोड अपन मानकर प्लेन होई जिवो तो कार्बन फर्टिलाइजर इफेक्ट गोटे अछि कार्बन को फर्टिलाइजर माने हमें फर्टिलाइजर माने कोन जोटा कि ग्रोथ रे हेल्प करबो ना तो फर्टिलाइजर हमें प्रोवाइड करछन यूरिया जो दोछन सो दैट कि प्लांट रे कोन हो ग्रोथ हो तो जोटा अपन ग्रोथ रे प्रोवाइड करता हमें कहते हैं फर्टिलाइजर तो प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस हायर concentration of carbon dioxide in the atmosphere act as a fertilizer enhancing the rate of photosynthesis and plant growth तब rising precipitation climate models project increasing rainfall across much of India due to global warming kind of providing the extra soil moisture needed for this accelerated tree growth तो से पहले एक्स्ट्रा सॉइल दरकार अछि जोटा कि अपन मन को ट्री ग्रोथ को बढ़ेबारे लागि छै चलो तापर देखिबा तो जियोग्राफिकल शिफ्ट विंटर वर्सेस द लागार्ड से गला तो गेन ड्राई रीजन ये गेन करबो ना होला ड्राई रीजन the largest expansion of carbon storage is projected in the arid and semi-arid margins of India जोटा कि अपन मन को arid और semi-arid माने जोटा कि ड्राई रे एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कंटेंट कमी जाए राजस्थान गुजरात वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड जगह देखो जदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहला बाडी भी वेट होबा स्टार्ट होला ह्यूमिडिटी स्टार्ट होला सनराइज रे जेटा आसीबो एटी कोन हबो ना एटी मॉइस्चर अछि तो लो प्रेशर स्टार्ट हबो तो लो प्रेशर हबो ना तो कोन हबो लाइटर हेतिबो और ऊपर को चलबा स्टार्ट हबो तो ऊपर को गला तो मन कोन हबो ना ड्रॉपलेट में सब स्टार्ट हबो माने कंडेंसेशन होला कंडेंसेशन पर प्रेसिपिटेशन हबो और रेनफॉल हबो यदि ड्राई हे गला ना तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नाही तो सेठी कोन अछि ना एयर रे मॉइस्चर होल्डिंग नाही ही नाही तो ना से ऊपर को जीव तो जीव बुझ पाछो तो गरम भी सेठी होबो तो जो कि ड्राई कंडीशन पे ए जगह कोन कि बारिश में बहुत कम आपको देखिए पे मिलुची तो से पेपर कोन मिलुची डेजर्ट अछि कोन अछि डेजर्ट ओके तब लागार्ड माने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जोठी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माने जोटा कि आपको बेसिक फोकस करे पे पड़बे जैसे कि बायोडायवर्सिटी रहबा कथा जैसे कि बायोडायवर्सिटी नाही शॉर्टेज अछि ironically ecologically rich zones like western ghats himalayas will be minimum relative growth they are experiencing ecological saturation the forests are already too dense to expand further तो माने देखो जदी गोटे एपिफाइट्स अपन मन कहथिन ना जदी रेन फॉरेस्ट जोटी भी हुए सेठी एपिफाइट्स होता तो माने रेन फॉरेस्ट जदी एवरग्रीन फॉरेस्ट अछि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तो सेठी एई बड़ी मात्रा में सब प्लांट गुडा सब थिले तो ऑलरेडी जदी एई सब जगह रे एई सब जगह रे अपन मानकर गछ ऑलरेडी अछि आ गोटे गछ कोठी ही स्टार्ट हो आ गोटे गछ कोठी बढ़िबो सेति में बेले बेले कोन होय ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे इन साइड शाखा रो बाहर की मन कोन करंती गोटे प्लांट स्टार्ट हो सो दैट कि इट कैन रीच अप टू द सनलाइट है ना अल्टीमेटली एनर्जी जदी दरकार कोठ दरकार हमको सनलाइट रो दरकार ओके एको में कोन कोंदी एपिफाइट्स एटा अपन क्वेश्चन आसीतला यस आप मानकर यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से देखि दबो तो यूपीएससी प्रीलिम्स रे क्वेश्चन दे आसीतला तापर दिबा आगु को तो द एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग को not a not a net good okay relying passively on the projection is a dangerous policy gamble the mathematical model assume ideal conditions and have massive blind spot तो बहुत ज्यादा blind spot अछि they do not account for the destructive real world forces intensified by climate change such as severe droughts से गला massive wildfires से गला pest outbreaks से गला but rampant human led deforestation है गला which can instantly wipe out this theoretical carbon gain आमे जदि एने कहउछन कि theoretically आमे carbon gain करूछंती तो ए सब जिंस को आमे कोन करबा कि भाई ना से तो नेट गुड हमरा आसी कि ना एजे हमरा नेट गुड रे आसी कि नहीं कोठी ना कोठी प्रॉब्लम तो हमरा एबे भी अछि कोन भाई ना ना अपन मन को देखो से कहउछन क्लाइमेट चेंज बट सीवियर ड्रॉट जो होची मैसिव वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड फायर से होची
पेस्ट आउटब्रेक हो जाउची तो से जन को लेके से कहउचंती इंस्टेंटली वाइप आउट दिस हिस्टोरिकल कार्बन गेन्स चलो तो एबे क्वेश्चन करबो बहुत छोटो टॉपिक अपन मानकर थिला तो जोडा आपन को कहि देली with reference to the India's forest conservation effort and ecological phenomena consider the following statement. Carbon fertilization effect refer to the increased rate of plant photosynthesis driven by higher concentration of atmospheric carbon dioxide. According to the Indian nationally determined contribution, the government aims to create an additional carbon sink 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent to 2030. Forest Survey of India, which publishes the biennial India State of Forest report, function as an attached office under the Ministry of Art Science. तो कौन है आंसर हम तो फास्ट जोड़ा भी आपण को उनी कहली फर्टिलाइजर इफेक्ट जोड़ा कि आपण मन को तो ठीक ही अछि अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल डिटरमाइन दिस इज आल्सो करेक्ट एटा तो आपण पूरा फैक्चुअल अछि आपण को मन रखिबो तो क्रिएट करे के पड़बो 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030 बट जो फॉरेस्ट सर्वे अछि ना फॉरेस्ट आसी गला जेते आपण को पोस्टल आसीतिला पोस्टल ता आपण मन को मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस आसीतिला बट इट विल कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन क्लाइमेट चेंज तो एटा आपण मन को रॉन्ग हे गला 1 and 2 राइट आंसर ओके तापर आपन को देखिया पे पड़िबो कि इंडिया रे सबटु कोन अछि ना आपन मन को हिडन एनर्जी क्राइसिस द एलपीजी वल्नरेबल कोर इश्यूज कोन अछि ओके कोर इश्यूज कोन अछि देखिया पे पड़िबो while the government heavily focuses on securing crude oil India faces a silent but severe crisis regarding liquefied petroleum gas. The ongoing tension in West Asia have made our LPG supply lines highly insecure. तो LPG ପାଇଁ କେମିତି ମାରାମାରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କିଏ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରିବି କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ବି କେମିତି କରିବି तो why India is highly vulnerable कौन ପାଇଁ इंडिया बहुत ज्यादा vulnerable କାହିଁକି ନା ଆମେ import କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ heavy import dependency India does not produce enough gas we import 60% of our total LPG requirement and you know our जो country अच्छी populous country okay most populous country in the world एते दी population अच्छी तो सेमाने कोड ना कोड खाइबे कि नहीं ना खाइबे केमती खाइबे विदाउट एलपीजी आ तो लोक मानकर माइग्रेशन हे गलानी लोक माने चुल्ली रे बसी के रांधी के खाउ नांती तापर तो हॉर्मोज चेक पॉइंट जोड़े alarming 90% of these LPG import pass through the single highly risky maritime route to Strait of Hormuz जोटा के प्रॉब्लम रे अछि तापर किचन क्रिटिकली the human factor in countries like China LPG is mostly used in factories which can be safely paused during a crisis in India imported LPG goes almost entered into the domestic household for daily cooking a sudden supply cut would create an immediate socio-economic crisis because household kitchens cannot be shut down. एथिପାଇଁ का गवर्नमेंट कौन करछि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रे चेंजेस करछि कि भाई जदि हाउस होल्ड ପାଇଁ का हेतिबो ताले 100% एज पर द 6 मंथ डाटा जो तमे 6 मंथ रे तम डाटा नि आला कि अपन माने प्रति 2 मंथ को थरे अपन गोटे एलपीजी निउछन माने ताले अपन को नेक्स्ट प्रति 2 मंथ को थरे गोटे एलपीजी तुमको प्रोवाइड करा जाओ इफ यू यूजिंग फॉर द हाउस होल्ड आ जदि अपन मानकर एग्रीकल्चर नहीं हैला ताले अपन मानकर केते लेबो ना 70% कोटा एफर द अपन 6 मंथ रे डाटा तो चेंजेस अछि आ गोटे फंड भी क्रिएट कराई छी फंड व्हाई वी रिक्वायर दिस फंड इमरजेंसी फंड गोटे कोन भाई क्रिएट कराई छी देखो एग्रीकल्चर रे अपन मानकर नेचुरल गैस लागु छला तो जते भी सब्सिडी आसे एग्रीकल्चर सब्सिडी केमती दिया होतला सपोज यूरिया अपन मान को पड़िला 100 रुपीस बट गवर्नमेंट यदि कौन करथिला 40 रुपीस निजे प्रोवाइड करथिला सो दैट कि फार्मर्स कैन पे ओनली 60 रुपीस एबे जदि अपन जो फंड आसी एथि पई काना जतो एलपीजी रो रेट बढ़ी गला
तो से कोन हम ना जो 100 रुपीस था पड़ी कि 120 रुपीस हे गेला then who is going to give the 10 rupees extra that can be bear by the government of India तो एठी भी गवर्नमेंट कोन करबो 60 रुपीस सॉरी 80 रुपीस के दबो ना गवर्नमेंट दबो और 60 रुपीस तो ये जो 60 रुपीस सेते बेले भी फार्मर दोतले एबे भी दबो तो जो बर्डन आसले का ऊपर गवर्नमेंट ऊपर आसले कि से आउ 40 रुपीस एक्स्ट्रा दबो दैट कैन बी कवर्ड बाय दिस फंड करंट अफेयर पार्ट थिला तो 1 ईयर बैक अछि सॉरी 1 मंथ बैक तो जदि जो माने पढि तो जानि थिबो जो माने पढि न आउ तरे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जांगी पढिबो कोन चेंजेस कराइछ ओके तापर आसले कि द डेंजरस स्टोरेज डेफिसिट तो ग्लोबल कंपैरिजन so to survive global supply shock a country like Japan maintains a massive 108 day emergency LPG reserve तो 108 दिन पर्यंत आपण मानकर से रिजर्व रखिथे जोटा कि इंडिया कर नथिबा बट इंडियाज रियलिटी कोन इंडिया हैज ओनली अबाउट 15 days of normal operational storage only 15 days सेमाने 1808 माने मोर देन 3 मंथ पयका सेमान रखछन बट हमर इंडिया कोन बहुत चालाक हमर इंडिया 15 days में करिछि operational storage even ores our dedicated deep underground cavern storage located in the Visakhapatnam port echete Visakhapatnam and Mangalore मन रखिबो hold just 1.5 day national supply तो केते पर्यंत 1.5 day national supply तो हम देखो अंडरग्राउंड cavern storage कोठी अछि मन रखियो पिला माने उडला विशाखापट्टनम उडला मैंगलोर एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन कोन अछि ना फिक्स द स्ट्रक्चरल वीकनेस कोन करे दरकार ना बिल्ड स्ट्रेटेजिक बफर्स so urgently expand underground rock caverns to store at least 14 to 21 days emergency LPG reserve for the nation. Demand shift energy transition. Shift urban household away from imported LPG towards electric induction cooking. This can be achieved by combining it with renewable energy. Schemes like PM Surya Ghar जोटा कि आपण मानकर आपण माने जदी 300 पर्यंत यूनिट आपण मानक फ्री मिलिबो तापर आपण जहा रहबो आपण सेल कर परबे आउ घर केतरा घर पे एटा कराइछि ना फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड free solar electricity alongside expanding pipe national natural gas networks okay तबे मैं क्वेश्चन लिखिला with reference to India's energy security profile and strategic well storage consider the following statement first statement kon achi the vast majority of India's liquefied petroleum gas import transit through the Strait of Hormuz is this correct or wrong over first in India the primary consumer of imported LPG in the industrial petrochemical sector rather than domestic household sector the Indian strategic petroleum reserve currently maintains deep underground cavern storage facilities in Visakhapatnam and Mangalore तो कोड यार राइट आंसर हबो तो फास्ट आंसर देखो कि जदि हम देखिबा vast majority liquefied is imported transit of the state of Hormuz yes 90% टोटल हमें करछन 60% कोन import तो 60% रो 90% is coming by state of Hormuz this is correct primarily consumer no this is the case for the China but for India primarily consumer कोन ना domestic household so this is incorrect the Indian strategic petroleum reserve currently maintains deep underground cavern storage facilities Visakhapatnam and Mangalore just now I said yes this is correct so 1 and 3 will be the right answer so B will be the right answer okay तो हमें जे डिस्कशन कले करंट अफेयर सब बेले हमरो 9 am रो करंट अफेयर होची आज टिके डिले हे गला टेक्निकल इशू थिला ट्रैफिक थिला तो क्लासेस होची आ जो माने चाहू छथि कि वे सब रे जॉइन करिया पई सेमनक पई का गोल्डन अपॉर्चुनिटी अछि काहे कि आपनकर फर्स्ट वीक में रे आपन मानकर क्लासेस स्टार्ट हो पई चाहू छी प्रति बैच रे आपन मानकर 25 to 30 स्टूडेंट्स एनरोल हेबे सो दैट कि आपन मानकर एक्सेसिबिलिटी रहबा आपन मानको इंडिविजुअली मेंटरशिप दिया जाय परबो जोटा कि अन्य कोठी आपन को मिलुनी बहुत पिला रहले कोन कि मेंटरशिप हेई पारे दिस इज एक्चुअली ठीक कथा एनरोल आपन माने करि परबे बहुत आपन मानकर ऑनलाइन भी अछि आपन मानकर ऑफलाइन भी अछि ता सहित आपन मानको गोटे जिंस कि सोशियोलॉजी रो जो ऑप्शनल आपन मानकर ललित सर प्रिय ललित सर नौचंदी जी कि आपन मानकर प्राइस जो एटा जदि आपन नेबे 349 रे ता माने कोन आपन को डेली गोटे क्वेश्चन सोशियोलॉजी रे लिखा पे पड़ियो जोटा कि आपन मानकर ऑप्शनल ले बूस्ट करिवो नंबर आपन रखि पारे ता सहित आपन मानको डिटेल लाइव वीडियो लेक्चर ऑफ पीडीएफ मिलिबो एंड टू कवरेज बोथ प्रीलिम्स और मेंस सब जिंस आपन मानकर कवरेज करा दिबो ता सहित आपन रेगुलर एमसीक्यू टेस्ट डेली टेस्ट होची पिला माने आई एम नॉट जोकिंग जदि लास्ट माने यस्टरडे जदि आपन मानकर किछि भी क्लास हेची
तार आज आपको फास्ट 10 क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू केतरा आपको क्लास है और 15 क्वेश्चन आपन टेस्ट देबे तापर आपको क्लास कंडक्ट होबो दिस इज करेक्ट सब दिन आपन टेस्ट होची मेंस राइटिंग भी आपन वीकली होची वीकली करंट अफेयर क्लासेस होची कंप्लीट गाइड और मेंटरशिप भी आपन को मिलिबो ओके तो अबे आपन प्राइस केते अछि फास्ट 100 स्टूडेंट मानको पई ओनली 2999 रुपीस जदि आपन माने नौचंदी लाइव क्लासेस ओडिया रे ही आपन मानको क्लास हो बोथ आपन बाइलिंगुअल लेबो ओडिया एंड इंग्लिश ओके जदि जे माने चाहउचंदी दे कैन कांटेक्ट नंबर भी अछि से नंबर आपन माने कांटेक्ट कर परिबे एटा होचे आपन मानकर कोन अछि नाइरा जो जगह अछि आचार्य बिहार रे सेठी आपन आसंतु डेमो क्लास में वी आर नॉट टेलिंग कि जस्ट कम एंड एडमिट so you take fast demo classes if you're comfortable you feel good then you only get into the classes okay thank you everyone thank you